welcome back to Brain Power. So today again we are going to learn something new about GK. So let us begin with the topic first. Which is the topic first we are going to learn? We are going to learn about flora and fauna. So let me take you to flora and fauna. But before that, what is flora and what is fauna? Flora refers to the plant life and fauna refers to the animal life. So let me take you and let us see what are we going to learn today. Plants are the life givers on earth. We eat many plants, herbs and the different parts in our daily diet. But some plants, trees or shrubs are potential killers of man. Some parts of the ornamental plants and flowers in a garden may be very poisonous. Some plants are very poisonous. Let us see how it is. The funny thing is, one part of a plant may be eligible while another part may be poisonous. एक पार्ट बहुत अच्छा हो सकता है और दूसरा पार्ट बहुत ही पॉइजनस भी हो सकता है. जैसे कि almost plants that are harmful to humans do not normally affect the birds and animals that eat them. Most of these plants are used in making medicines. बहुत सारे plants ऐसे होते हैं जो हम लोग मेडिकल मेडिसिन्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. द फॉलोइंग चार्ट लिस्ट सम ऑफ मोर कॉमन पॉइजनस प्लांट्स. तो चलो अब हम देखते हैं कि कौन से प्लांट्स बहुत ज़्यादा पॉइजनस होते हैं. तो लेट मी टेक यू टू द फर्स्ट वन. कैन यू सी द पिक्चर? नेम ऑफ द प्लांट. सो फर्स्ट वन इज hyacinth, then second one is narcissus, the third one is daffodils. So this plant is toxic parts. ये तीनों प्लांट का टॉक्सिक पार्ट कौन सा है? इट इज़ द bulb. It is the bulb. So how it is toxic for us? What are its actions? Let us see. Nausea. It is nothing but feeling sickness. बहुत ज़्यादा जब ये प्लांट हम लोग बहुत देखते हैं या उसको फील करते हैं तो इट फील्स लाइक सिकनेस, वॉमिटिंग एंड डायरिया, मे बी फैटल मीन्स इससे डेथ भी हो सकती है. तो इसी तरह यहाँ पे डिफरेंट प्लांट्स के नाम दिया है, उसके टॉक्सिक पार्ट्स दिया गया है एंड इट्स given the actions here. So you need to go through all this, read and understand which plant is toxic and very poisonous for our health. Okay, this is very useful, kids. Please go through this carefully. So after flora and fauna, let me take you to plant crossword. So what are we going to do here? Let me check out. We are going to solve the crossword using the clues given on the next page. यानी कि इसके clues हमें next page पे दिया है और हमें crossword puzzle solve करना है. तो let us begin with the first one. What is the first one? The process by which seeds sprout and produce new plants. तो what is the answer? That is your downward. तो हमारा first answer है यहाँ पे germination. The first answer is germination. GERMINATION. तो हमारा first answer है यहाँ पे germination. The second one, male reproductive parts of plant. यानी कि प्लांट्स के जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है वो कौन से है? इट इज स्टेमेंस. STEMENS यहाँ पे लिखना है आपको. STEMENS, स्टेमेंस. तो इसी तरह यहाँ पे आपको क्वेश्चन रीड करना है और उसके क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व करना है. ओके किड्स, यू नीड टू रीड इट प्रॉपर्ली. और मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, आप इसकी हेल्प लेके ये पूरा पेज कंप्लीट कर सकते हैं. सो यू कैन गो थ्रू पेज 10 and 11 and solve the crossword puzzle. After crossword puzzle, let me take you to language of flowers. यानी कि जैसे हम बात करते हैं गुजराती में, हिंदी में, वो हमारी लैंग्वेज है. और चलो अब देखते हैं हम लैंग्वेज ऑफ फ्लावर्स क्या होता है. लेट मी टेक यू टू लैंग्वेज ऑफ फ्लावर्स. द फर्स्ट वन, द लैंग्वेज ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड फ्लोरियोग्राफी. Various flowers are associated with various sentiments.
Write the feelings conveyed by the following flowers. Use the help box given on the next page. यानी कि यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे हमें हेल्प बॉक्स दिया गया है और वहाँ पे आंसर्स है, तो हमें फाइंड आउट करके लिखना है. ओके, तो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट वन. आप हो मेरे साथ? ओके, जॉइन मी. ओके, फर्स्ट वन इज मैग्नोलिया. तो इसका आंसर है नेचर, लव ऑफ नेचर. मैग्नोलिया का आंसर है लव ऑफ नेचर. सेकेंड वन इज लिली, ब्यूटी एंड एलिगेंस. सो सेकेंड वन का आंसर क्या है? ब्यूटी एंड एलिगेंस. द थर्ड वन ऑर्चिड. ऑर्चिड का आंसर है रिफाइंड ब्यूटी. व्हाट इज द ऑर्चिड आंसर? इट इज refined beauty. The fourth one, it's amaryllis. Amaryllis. The answer is pride. The answer is pride. The fifth one, pink carnation. Pink carnation का आंसर है a woman's love, a mother's love. यानी कि a woman का love and a mother's love. Aster. What is the language of aster? Symbol of love. And Dentinus, talisman of love. Okay, so you should write it as I have written here. Daisy. Daisy का है innocence and purity. Daisy का है innocence and purity. Jasmine, cheerfulness and grace. cheerfulness, जैसे हम cheerful रहते हैं हमेशा, we are very active and we are smiley and we are full energetic, वैसे cheerfulness. lotus का है eloquence. eloquence. irish. irish का है good news. when we hear some good news, जैसे कि अभी आपको चॉकलेट मिल रहा है तो that is your good news. so that is iris. and the next page we come with सनफ्लावर. सो सनफ्लावर का कौन सा लैंग्वेज है? सनफ्लावर की लैंग्वेज है प्योर एंड लॉफ्टी थॉट्स. प्योर एंड लॉफ्टी थॉट्स. देन इज मॉर्निंग ग्लोरी. सो इट इज लव इन वेन. मॉर्निंग ग्लोरी का है लव इन वेन. द थर्ड वन लिली ऑफ द वैली मीन्स स्वीटनेस एंड ह्यूमैनिटी रिटर्निंग हैप्पीनेस. Sweetness and humanity returning happiness. The fourth one is marigold. marigold का क्या है? marigold की language है pain and grief. so you should write pain and grief. The 15th one rosemary. it is in remembrance. rosemary का मतलब है the language is used as remembrance. 16th one tulips is the declaration of love. ट्यूलिप्स का मतलब है डिक्लेरेशन ऑफ लव. कैक्टस एंड्योरेंस. कैक्टस का लैंग्वेज है एंड्योरेंस. देन इज नार्सिसस इगोस्टिज्म. इगोटिज्म. वीनस फ्लाईट्रैप. इट इज डेक्सिएट. डेक्सिएट. वॉयलेट का है लव एंड फेथफुलनेस. तो ये थे हमारे लैंग्वेज ऑफ फ्लावर्स. आपको इसी तरह और एक बार गो थ्रू करना है और ये रीड करना है. ओके किड्स? सो आफ्टर द लैंग्वेज ऑफ फ्लावर्स वी आर कमिंग टू एनिमल होम्स. सो लेट अस सी व्हाट इज एनिमल होम्स. जैसे अभी हमारा घर होता है वैसे ही एनिमल्स का भी घर होता है. तो चलो आज देखते हैं हम एनिमल होम्स में हम क्या सीखते हैं. ओके, all animals need shelter to protect themselves from rough weather conditions and predatory wild animals. Use the clues given in the help box to name the homes of the given animals. Some names may be used twice. तो यहाँ पे एनिमल्स के क्लूज़ दिया गया है, वो क्लूज़ को हमें फाइंड आउट करके हमें आंसर लिखना है. तो जैसे कि यहाँ पे अभी जैसे बारिश ज़्यादा हो रही है तो एनिमल्स का भी घर होता है, तो एनिमल्स अपने घर पे रुकते हैं. तो चलो हम देखते हैं कौन से एनिमल का कौन सा घर होता है. ठीक है, तो फर्स्ट वन इज़ एंट. तो एंट का है हिल और फॉर्मिकेरी. एंट का है हिल और फॉर्मिकेरी. द सेकेंड वन इज़ ईगल. ईगल का है आयरी. ईगल का है आयरी. द थर्ड वन इज फॉक्स. होल, लेयर और डेन. तो फॉक्स कहाँ पे रहता है? होल, लेयर और डेन में. रैबिट, वॉरेन,
burrow और hutch, warren, burrow और hutch. wasps, wasps कहाँ रहता है? विस्पियरी और नेस्ट में रहता है. wolf, the sixth one, where it lives? It lives in lair or den. It lives in lair or den. snake, snake lives in nest. Snake lives in nest. Eighth one, squirrel, squirrel lives in dray. Squirrel lives in dray. Lion lives in den. Where does the lion live? It lives in the den. 10th one, mole, means where mole lives? In burrows, fortress or tunnel. Fortress, tunnel. Then is termite. Termite lives in mound. Termites live in mound. Okay. Then otter lives in holt or ledge. Holt or ledge. Chicken lives in coop. Chicken lives in coop. And dog lives in canal. Where does the dog live? Dog lives in the canal. Hare lives in form. Hare lives in form. Hare lives in form. So this was our animal homes. You have to repeat it, read and write. Okay, I have given you the answers. Just check the correct spelling and rewrite it. Okay kids. So after animal homes, let me take you to animal classification. So let us check what we are going to do today. We are going to classify the animals given below in the correct categories. यानी कि यहाँ पे animals दिया गया है, हमें उनको category के wise divide करना है. तो चलो चलते हैं. First one is dolphin. Dolphin is a mammal. तो आपको mammals में लिखना है. Second one is what? Second is angler. Where does it come? Where does angler comes? Can anybody guess? Angler is a fishes and amphibian. तो आपको angler यहाँ पे लिखना है. So the third one is alligator. Alligator comes in reptiles. तो आपको reptiles में लिखना है. Then the fourth one is cricket. Where does cricket come? It is a insect. तो आपको insect में लिखना है. Salamander. Where does salamander comes? It is a fishes and amphibians. तो आपको salamander यहाँ पे लिखना है. Then is antelope. Where does antelope comes? Can anybody guess? Antelope is a mammal. तो आपको mammals में लिखना है. Then is squid. Where does squid comes? Can anybody guess? Squid is a other invertebrates. So squid comes in other invertebrates. Then is walrus. Walrus is a mammal. So you need to write in mammals. Lamprey. Where does lamprey comes? Lamprey is a fishes or amphibians. So you need to write it there. Crab. Where does crab comes? Crab is other invertebrates. So you need to write it in other invertebrates. Jellyfish. Can anybody guess where does jellyfish come? It is in other vertebrates. Earthworm. Earthworm also is a other vertebrates. Invertebrates. Okay. Then comes kangaroo. Where does kangaroo comes? Kangaroo is a mammal. So we need to write it mammals. Honeybee. Where does honeybee comes? Any guesses? Honeybee is a insect. So we need to write it in insects. Then second is cicada. Where does cicada comes? It comes in insects. It is a insects. Then is hippopotamus. Where does hippopotamus comes? Can anyone guess? Hippopotamus also is a mammal. Then is gila. Where does gila comes? Gila monster. It's in reptiles, as we had learned today only. Gila monster. Then is scorpion. Where does scorpion come? You need to guess. Scorpion also is a what? Any guesses? Scorpion also comes as other invertebrates. So you need to write it in other invertebrates. Then is after scorpion turkey. Where does turkey come? Turkey comes in birds. So turkey is a bird. After turkey, shark. Where does shark come? Shark also comes in
the fishes and amphibians. Then is cassowary. Cassowary is a bird, so you need to write it in birds. Falcon. Falcon also is a bird. Anaconda. Where does anaconda comes? Any guesses? Anaconda is a reptile, so you need to write it in reptile. Where does peacock come? Peacock also is a bird, so we need to write it in bird. Komodo. Where does komodo comes? Komodo also is a reptile. Then one is rhea. Rheas. Where does it comes? Rheas also is a bird. Tortoise. Where does tortoise come? You should know by now. Any guesses? Tortoise also comes in reptiles, so it is a reptile. Newt. Newt also comes in fishes and amphibians. Praying. Where does it come? Praying mantis. It comes in insects. Praying mantis is a insect. Locust is also a insect. So this was the classification of animals. I hope you have understood. So you just need to read it and write it. Okay kids, you need to understand it thoroughly. So after classification of animals, let me take you to flightless birds. So let me help you with the flightless birds. What is that exactly? Birds that cannot fly and are called flightless birds. जो birds उड़ नहीं सकते उनको flightless birds कहते हैं. The ancestors of these birds could fly. However, in the absence of predators, they had lost the need and ability to fly. Try to identify them. So let us identify them. The first one. These birds are short-legged, have short, thick feathers and stocky bodies. ये बहुत इसके पैर बहुत छोटे रहते हैं और इनकी स्किन बहुत इनके feathers बहुत thick रहते हैं. They are excellent swimmers. तो ये बहुत अच्छा swim करते हैं. They are found in Antarctica and eat fish, krill and squid. And they lay their eggs and raise their young ones on land. बट ये अपने एग ले करते हैं लैंड के ऊपर बट हमेशा रहते हैं पानी के अंदर. ये है पेंगुइन. विच इज़ दैट? इट इज़ पेंगुइन. द सेकेंड वन. दिस लार्ज बर्ड्स आर नेटिव्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड लिव इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ये हमेशा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहते हैं. दे हैव लॉन्ग लेग्स एंड featherless neck and honey helmet on their head. इनके सर के ऊपर honey helmet जैसा रहता है. The female is larger than the male. इनके क्रॉसबेरी के फीमेल्स बहुत लार्जर रहते हैं मेल से भी. So it is cassowary. It is cassowary. So the answer is cassowary. The third one. These small birds are natives of New Zealand. They have coarse bristly feathers and a long slender beak. They are found in temperate forest and have been named after their shrillcalls. It is kiwi. The answer is kiwi. तो सभी को kiwi लिखना है. And the fourth one. The birds are natives of Africa. They are long necks and legs and can run up to speed of 97.5 km/h. They are largest living species of birds and lay the largest eggs. So any guesses? Yes, it is none other than ostrich. So the answer is ostrich. The fifth one. This bird was a herbivore and driven to extinction around the year 1500. It was native of New Zealand and closely related to the emu, cassowary and ostrich. It stood at around 12 feet tall and weighed around 230 kilograms, which is that it is moa, M-O-A, moa. तो ये हो गया हमारा फ्लाइटलेस बर्ड, यानी कि जो बर्ड्स फ्लाई नहीं कर सकते. तो ये पूरा आपको कंप्लीट करना है आपकी टेक्स्ट बुक में. रीड एंड अंडरस्टैंड. ओके किड्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड टुडेज टॉपिक्स. आई थैंक यू किड्स. हैव अ गुड डे. टेक केयर. बाय.